types of motion now. So now have you observed vehicles on a straight road? A car moving on a straight road? March past of soldiers in parade. You might have seen parade, or all of you might have seen parade on 26th of January or 15th of August. So you might have seen the soldiers march pasting in the parade, yeah? So falling of a stone. It can fall from anywhere. And sprinters in a 100-meter race also move along a straight track. So these are the those various animation that we just talked about, that a car moving on a straight road, soldier march pasting in the parade, and the sprinters. Sprinters are the ones who run in the race. Yes? So now, to understand it even more in a better way, we have the activities for the types of motion that we are going to study. So we have activity number 7 here. Take a stone, tie a thread to it and whirl it with your hand. So this is the thread I have taken and I have tied a stone below it like this. So this is the thread and this is the stone. Now what I am going to do is, I have taken this thread like this and stone below here, and then I am whirling it. Or you can whirl it upwards also, like this. So this is the motion that I am giving it. So now what I am going to see is, observe the motion of the stone. The stone moves in a circular path. Means this is the motion that is coming if I am rotating it again and again. So ये circular motion है जो stone की आ रही है when I am whirling it above my head. Yes, you can try it at your home also, that if you tie a thread with a stone and you keep on whirling it, so it is going to give you a circular motion. You can observe it looking upwards, that you will see that stone is moving circularly but not going in any other direction. Yes, so in this motion, distance of the stone from your hand remains the same. And why is that? इन्होंने तो बोला है कि जो थ्रेड से हमारे हाथ से जो स्टोन का डिस्टेंस होएगा वो सिमिलर रहेगा हर टाइम. बट ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज जो हमने थ्रेड लिया है उसका डिस्टेंस इज सेम, एंड वो डिस्टेंस आप अगर वर्ल भी कर रहे हैं तो भी वो सेम ही रहेगा. सो स्टोन कहीं भी जाए इन अ सर्कुलर मोशन, तो स्टोन से हमारे हैंड का distance will always be same. It is not going to change because the distance of thread is same. And circular motion में जो भी motion हमारा है वो पूरा stretched out है. चाहे वो circular motion में अगर thread का point यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, if the thread is going here, if it is going here, this is the circular motion we are talking about. This movement I am showing you as it is moving in a circular direction, like a wheel. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये थ्रेड का डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इधर भी सेम है. Here also it is same. So every direction you see that you will find that the distance is same from stone to my hand. Yeah. So this is my hand and this is position of the stone which is being changed. ये stone की position change हो रही है circular motion में, like this. So now that is why the distance remains same. So it is called the circular motion. इस टाइप के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा होता है, सर्कुलर पोजीशन में घूम रहा होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन. सो दिस इज द एनिमेशन कि एक फैन का हमने रखा है एनिमेशन, जो फैन का मिडिल पार्ट आपने देखा होगा. सो इट मूव्स इन अ सर्कुलर पोजीशन. सो यू कैन सी दैट इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, गोल गोल घूम रहा है repeatedly it is moving in a circle path like this. Now, next is some examples are blade of an electric fan or hands of a clock. इसमें हमारे पास कुछ examples आते हैं किसके? एक तो इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड के, एंड जो हमने क्लॉक ड्रॉ की थी, अगर आपको याद हो या आपने क्लॉक देखी भी होगी, तो इसमें हमारे पास आवर का होता है हैंड, सेकंड्स का हैंड होता है. तो इसमें क्या हो रहा है? दिस ऑल्सो मिनट्स का जो हैंड है, it is also moving in a circular direction, as you can see. So this is the middle part, and this particular hand of a clock, minute clock hand, is moving. It will come here, then its position will come here, then here, then here, then here. Yes? And in case of electric fan also, fan के आपने blades देखे हैं, when you switch on
and when it gets the electricity it moves in a circular direction very fast. बहुत fast motion होता है उसका, but it moves in a circular direction. So these are various examples, few examples of what we are talking about, the circular motion. Now, if we mark a point anywhere on the blades of a fan or the hands of a clock, so if we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, so let's suppose that this is my hand of a clock and I have marked a point here. Yes, so what will happen? What we are observing here, the distance of this point from the center of a fan or a clock remains the same. So even this point, even if the minutes hand is coming here, the point will remain here. And if it is coming here, the point will still remain here. And coming in this direction, the point will remain still here. And lastly, if it is coming here, the point will remain here. So in all the cases, the distance of this point that we have marked is always be going to same from the center point. Center से इस point का distance हर उस केस में सेम रहेगा जब ये हमारे मिनट की जो हैंड है, it is moving in a circular direction from the middle point we are talking. बीच में से इस point का distance सेम रहेगा चाहे हमारे मिनट की हैंड इधर हो या इधर हो. If it is coming here also or here also, the distance is going to be same. So ये जो point मैं आपको बार बार बता रही हूँ, it is a very important point for you to remember. This is the special character of a circular motion. That यहाँ पे distance हमारा change नहीं हो रहा है. हम जैसे यहाँ पे stone से हमारे hand का distance change नहीं हो रहा है. यहाँ पे we have marked a point here and it is the distance of this point from the center is also not changing. So these points are need to be remembered. So here is the example of circular motion. In this, the example of fan is there and also the clock, जिसके बारे में हमने बात की है. Yes, so in some cases, an object repeats its motion after some time. अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो जब मोशन में होता है तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो जिस तरीके की मोशन कर रहा है उसको बार बार रिपीट करने लग जाता है. So that motion is called as periodic motion. So here is an example. It is a very common example of moving a pendulum, as we have seen. Here, for example, I have taken a thread. Now, thread and I have tied a stone below it. So now I am not moving it in a circular position. Instead, I am moving it like this. So this is my motion. For if I am moving the thread with the stone, I am going with the animation here, as you can see. So now this type of motion, इस type के motion में क्या हो रहा है कि for example pendulum जो है नीचे बंधा हुआ है, it is repeating its motion. ये पहले आगे जा रहा है, then it is going back, then it is coming in the front, then going back. So this type of motion it is doing again and again, repeating again and again. So this type of motion is called as periodic motion, as you can see in this pendulum. So to and fro motion of pendulum is periodic motion. This example needs to be remembered and periodic motion होता क्या है ये याद करना बहुत important है. Now coming to its examples. So the commonest example you might have seen students or children playing in the park or sitting on a swing. तो swing भी क्या करता है? Swing also shows the movement of to and fro. Swing पहले आगे जाता है, then it goes back, then front, then back. So that is also to and fro motion of a swing that shows the periodic motion. Other examples are the clock, wall clock जिसमें हमारे पास pendulum होता है, and the guitar. Guitar also जो उसके strings होते हैं, when you are playing a guitar, तो string भी क्या करता है? When it vibrates, तो vibration कैसी होती है? Vibration is a very fast to and fro motion. Vibration we are talking about, vibration is the quick to and fro motion. So that is why जब वाइब्रेट करती है कोई चीज, let it be तबला, let it be guitar, so उसके जो strings हैं, they are moving in a very quick to and fro motion. So that is also called as a periodic motion. And here when you see this bell, if you are ringing a bell also, तो bell में भी जो bell होता है small, जो हमारे पास metal का बना होता है, that also shows to and fro motion. Yes, so these are some examples of periodic motion. So here
periodic motion where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time. So here you see that if a pendulum is moving, so it is moving in a fixed interval of time. Fixed interval of time का मतलब क्या है? For example, if the pendulum is moving in the front side in 2 seconds and it is coming back in again 2 seconds. Yes? So 2 seconds up, 2 seconds back, 2 seconds up, 2 seconds back. तो ये क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम में मोशन हो रहा है. Yes? ऐसा तो नहीं हो रहा ना that pendulum is moving एक बार बहुत फास्ट मूव कर रहा है and then while it is coming back then it is moving slow. No, it is moving with the same speed and same time. You can, आप खुद से भी मेजर कर सकते हैं. अगर आपके पास वॉल क्लॉक है जिसमें पेंडुलम लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं, आप टाइम में नोट कर सकते हैं जो पेंडुलम मूव कर रहा है वो कितने देर में मूव कर रहा है. वो टू डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड कितने सेकंड्स में जाता है एंड राइट साइड कितने सेकंड्स में जाता है, एंड यू कैन काउंट इट. तो यू विल फाइंड आउट दैट योर कैलकुलेशन इज कॉन्टिन्यूअस और इट इज फिक्स्ड. वो एक ही कैलकुलेशन ऑफ टाइम में मूव कर रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर दैट पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. तो यू सी नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मोशन हियर वी सी ऑफ स्यूइंग मशीन. स्विंग मशीन सबने देखा है जिससे कपड़े सिले जाते हैं. Here we see that it remains at same location while its wheel moves with a circular motion. Here you see the wheel of a sewing machine. तो स्विंग मशीन तो एक ही जगह पे है, but while stitching the cloth you are moving its wheel. आपने देखा होगा your mother is also maybe stitching some clothes अगर आपके घर में होगा तो. Else if you go to a tailoring shop तो वहां पे you see that sewing machine and its wheel moving while a tailor is stitching the cloth. So here the movement of wheel is showing which motion? हमने पढ़ा था इसके बारे में. It is moving in a circular direction. So that is why that sewing machine is showing you the circular motion. Now look at this ball. The ball is moving in the front direction and back direction as you can see because it is the animation. So here you see the ball is moving in the front direction. Also the ball is rotating. Ball एक तो खुद भी गोल गोल घूम रहा है and plus it is moving in the forward direction also. So here we can see that we see the two types of motion here. यहाँ पे आपको दो तरीके के मोशन दिख रहे हैं. यहाँ पे ऊपर हमें क्या दिखा था? सर्कुलर मोशन दिखा था. व्हील सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रही थी. Here हमें दो तरीके के मोशन दिख रहे हैं. I hope you understand that if the ball is moving in one direction, either it can be front or the back. Also the ball is rotating. Ball खुद भी गोल गोल घूम रही है. Yes. So ball is rolling on the ground as well as moving forward. The ball undergoes rectilinear motion. Now rectilinear motion का मतलब क्या होता है? Rectilinear motion का मतलब? Rectilinear motion moving in a straight line. Moving in a straight line. So as you can see in this animation that the ball is moving in a straight line. Either it is going forward or backward. So it is moving in a straight line. Also it is rotating. खुद भी गोल गोल घूम रही है बॉल. So that motion now adds up to be rotational motion. So now the ball is showing you the rectilinear motion and the rotational motion together. दोनों मोशन आपको दो मोशन साथ में दिख रहे हैं. Rectilinear and rotational. So now the question arises here. Can you think of other examples where objects undergo combination of different types of motion? ये तो हमने आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ गया जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी था. रोटेशनल मोशन ये हमें किस में देखने को मिल रहा था? बॉल में. ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है. बॉल में हमने देखा रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन. अब कोई और ऐसा एग्जाम्पल आपको पता है जिससे आपको ये पता लग सके कि एक से ज्यादा मोशन जिसमें हो रहे हैं? तो here we have an example of Earth moving around the sun. तो ये क्या है? This process is undergoing. कितने सालों से चला आ रहा है ये process? This type of motion is happening since thousands of years. तो what kind of motion we see in this particular example? So now we see here that Earth rotates around its axis. Earth अपने axis पे ही घूमता है, गोल 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 गोल. Yes? So वो क्या है? Rotatory. उसको हम बोल देते हैं रोटेटरी मोशन. नाउ इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब ये सन के अराउंड भी घूम रहा है इन अ कर्व्ड वे.
सो हमने उसको क्या बोल दिया, कर्विलिनियर मोशन। एंड लास्टली इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ये सब भी हो रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। जो हमारा एक टाइम है 365 डेज लगते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ को, तो इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज रिमेनिंग द सेम एवरी ईयर। सो नाउ वी कॉल इट एज पीरियोडिक मोशन। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि here we see 3 types of motion in combination, that the earth rotating about its own axis is the rotatory motion, and it is revolving around the sun also, that is curvilinear motion, and thirdly in a periodic motion in a particular या फिर fixed interval of time.